तो चलिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया है उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। The rapid increase in human population in the world is known as population explosion. This can be attributed to a constantly increasing birth rate, decrease in death rate, and this will lead to increased stress on all resources. Promoting smaller families, use of contraceptive methods, raising the legal age of marriage 18 years for females and 21 for males are some methods to control population explosion. Natural methods work on the principle of avoiding chances of ovum and sperms meeting. आप इस वीडियो को पॉज करें और इन सारे ही पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिख लें। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। Periodic abstinence is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. Withdrawal or coitus interrupts is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. Lactational amenorrhea, absence of menstruation method, is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. आप इस वीडियो को वापस से पॉज करें और इन सारे पॉइंट्स को भी अपनी कॉपी में लिख लें। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। Condoms, diaphragms, cervical caps and vaults are some examples of barrier methods that prevent sperm and egg meeting. Another effective and popular method is the use of intrauterine devices, that is IUDs. These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. Sterilization methods are permanent. Tubectomy and vasectomy are examples of such methods. आप इस वीडियो को वापस से पॉज करें और इन सारे पॉइंट्स को भी अपनी कॉपी में लिख लें। आपके सामने कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस आएंगे जो आपको अपनी कॉपी में करने होंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एंड वर्कबुक से क्वेश्चन 3, 5, 6, 7, 8 एंड 10।